हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, in this video I am going to discuss a short story written by Mulk Raj Anand, The Lost Child. Here are the things which we are going to cover in this video. So first let's begin with a short introduction of the writer Mulk Raj Anand. So friends, Mulk Raj Anand was one of the most important Indian writers in English during the 20th century. He was born on 12th December 1905 in Peshawar, which was then part of British India. After his early education in India, he went to England for higher studies, where he became part of many literary and political groups. His stories are known for showing the struggles for ordinary people like farmers, laborers and those who were called untouchables. तो ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए ज़्यादातर लिखते थे. ही रोट अबाउट सोशल इनजस्टिस विथ ऑनेस्टी बट ऑल्सो विथ ग्रेट कंपैशन. सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर अनटचेबल, कूली, टू लीव्स एंड अ बर्ड. इवन दो द लॉस्ट चाइल्ड is a simple and short story, it still carries his unique style of capturing human emotions in very touching way. मतलब बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, फिर भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर इमोशंस भरा है. Now we'll see the summary. It was the time of the spring festival. Spring मतलब season between winter and summer, जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा वार्म होता है, बहुत ज़्यादा ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है. एवरीवन इन द टाउन वॉज हैप्पी. द स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ पीपल वेयरिंग ब्राइट कलरफुल क्लोथ्स. दे वर मूविंग टूवर्ड्स द फेयर आउटसाइड द सिटी गेट्स. मतलब स्प्रिंग का सीज़न है, लोग जो है बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं, सब कुछ कलरफुल दिख रहा है, लोग मेले में जा रहे हैं. सम वॉकिंग, सम ऑन हॉर्सेस एंड सम इन बुलक कार्ट्स. People were talking, laughing and enjoying themselves. So the story is about one boy, okay, young boy. The boy is very excited. He was full of energy, running between his mother and father. His eyes were shining with excitement. तो इस भीड़ में एक लड़का है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है, यहाँ वहाँ भाग रहा है, अपने माँ के पास कभी आ रहा है, कभी अपने फादर के पास आ रहा है. उसका पूरा एक्साइटमेंट उसके आंखों में दिखाई दे रहा है. Means everything around was so fresh, so green that it felt like nature was also celebrating. Now they entered in fair, where boy stopped near a shop to look at the toys. His parent called him, "Come child, let's go." And he quickly ran back to them. But in his heart, he still wished for that toy. जो भी कुछ वो देख रहा था लड़का यहाँ पे मेले में, वो सब कुछ उसे चाहिए था. उसको देख के ना बहुत एक्साइटेड था, टॉयज़ को देखकर, स्वीट्स को देखकर, बलून्स को देखकर, और खुद ही मन में सोच लेता था कि उसके पेरेंट्स उसको वो नहीं दिलाएंगे किसी ना किसी रीज़न से. व्हेन ही रीच्ड देम ही कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ. ही सेड, "आई वांट दैट टॉय." हिज फादर फ्राउंड बट हिज मदर स्माइल्ड काइंडली एंड सेड, "लुक अहेड माई चाइल्ड, सी हाउ ब्यूटिफुल एवरीथिंग इज." द बॉय फॉरगॉट हिज सैडनेस when he saw the golden mustard field, सरसों का खेत. They actually looked like waves of gold under the blue sky. The flowers danced in the wind and their sweet smell filled the air. Butterflies and bees moved from flower to flower and dragonfly flew lightly over them. The boy was so happy that he ran into the field, jumping and laughing like a little deer. His parents called him back and he came, but soon his attention went to the tiny insect moving on the path. His parents sat to rest under a big old banyan tree near a well. Its branches spread wide, giving cool shade, like a grandmother protecting her children. The wind blew and flowers fell like rain. The boy started collecting them happily in his small hands. Then he heard the soft sound of dove cooing. चिड़िया की उसने आवाज़ सुनी. The dove, the dove, he shouted and ran towards his parents, dropping the flowers he had picked. As they came closer to the fair, the crowd became bigger. The smell of gulab jamun, jalebi, barfi filled the air. The boy's mouth watered. He whispered, "I want that barfi," but he didn't ask loudly because he knew his parents might say no. A flower seller was selling beautiful garlands. The smell was so nice that the boy softly said, "I want that garland." But again he knew they wouldn't buy it for him. Then he saw a balloon seller with many colorful balloons. Red, blue, green, yellow, like little rainbows. He wanted one such but didn't ask because he thought his parents might say he was too old for balloons. Now a juggler was playing a flute and Snake was moving to the tune. The boy wanted to watch but remembered his parents didn't like him standing near street performers. At last he saw the roundabout. It is a ride with wooden horses going round and round.
People were laughing and having fun. The boy got excited and said, I want to go on the roundabout. मतलब ऐसे घोड़ा अटैच रहता है, वो गोल गोल घूमता है, ऐसा एक राइड था। उसे देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ पे बोलता है कि अपने पेरेंट्स को कि मुझे भी यहाँ पर जाना है। बट वेन ही टर्न टू आस्क हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर। जब वो पीछे मुड़ता है अपने पेरेंट्स को पूछने के लिए तो देखता है उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं हैं। He looked everywhere but couldn't find them. Fear filled his heart. Tears rolled down his face as he shouted, "Mother, father." अपने माँ बाप के लिए ये चिल्लाने लग जाता है, देखकर एकदम ज़्यादा डर जाता है कि दोनों कहाँ गए। He ran through the crowd, bumping into people, getting his clothes dirty and his turban loose. His body shook as he cried for his parents. मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं उस सिचुएशन को, बच्चा क्या फेस कर रहा था। A kind man saw him and lifted him up. Whose child is this? The man asked. The boy only cried, I want my mother, I want my father. The man tried to make him happy, offering many things like roundabout ride, jugglers show, colorful balloons, flowers, sweets, but the boy didn't care about any of these things now. All he wanted was his mother and father. So friends, this story actually teaches us that material pleasures are just temporary, but love and security are priceless. The boy forgets all his desires for toys and sweets once he loses his parents, showing that true happiness lies in relationships, not in materialistic things. चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं. Discuss the lost child as an allegory. तो ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में कि एक्सप्लेन द डीपर मीनिंग ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड. तो एलेगरी का मतलब क्या होता है? डीपर मीनिंग या फिर हिडन मीनिंग. ठीक है, तो ये आंसर को आप 20 मार्क्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट विल सी व्हाट इज़ गिवन इन एन इंट्रोडक्शन यू मस्ट राइट. द लॉस्ट चाइल्ड इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मुल्कराज आनंद, one of the most prominent writers of Indian English literature. Born in 1905, Anand is celebrated for his simple yet deeply touching narratives that highlight the struggles, emotions, and the moral values of ordinary people. So, you must write something about the writer in an introduction, then few things about the story, and little hint about the question, means what the question has been asked for. In this story, he describes a young boy's visit to village fair with his parent. At first, the child is completely attracted, got excited by toys, sweets, flowers, balloons, and rides. But when he realized that he got separated from his parents, all these attractions lost their importance, and his only wish is to find them again. So, the lost child can be seen as an allegory, means can be seen that the story has a deeper meaning or a hidden meaning of human life. तो जो फेयर है यहाँ पे, मतलब जो मेला है, वो क्या सिंबलाइज करता है? मटेरियल वर्ल्ड को सिंबलाइज करता है, विच इज़ फुल ऑफ टेम्पटेशन. द चाइल्ड रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन सोल. जो चाइल्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ह्यूमन सोल को. ह्यूमन का जो लॉन्गिंग रहता है, मतलब किसी चीज़ के लिए चाहत, वो सारी चीज़ को यहाँ पे चाइल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स के लिए तड़पने लगता है तो ये जो है ना, सोल का जो डीपर सर्च फॉर लव है वो दिखाता है. सेफ्टी का इंपॉर्टेंस बताता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन का इंपॉर्टेंस बताता है. तो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन आता है कि डीपर मीनिंग एक्सप्लेन करो इस शॉर्ट स्टोरी का, तब भी आंसर आपको सेम ही लिखना है. नाउ आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन शॉर्ट व्हाट इज गिवन हियर इन द नोट्स. सो हियर इट इज गिवन द लॉस्ट चाइल्ड इज मोर देन जस्ट अ स्टोरी अबाउट अ बॉय who loses his parents at a fair. It can also be understood as an allegory, which means a story with a hidden or deeper meaning. तो ये स्टोरी सिर्फ एक छोटे बच्चे का नहीं है जो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, बिछड़ जाता है, बल्कि इसमें ना बहुत डीप मीनिंग छुपा हुआ है, हिडन मीनिंग छुपा हुआ है. इट इज़ एक्चुअली द बॉयज़ एक्सपीरियंस which becomes like the journey of the soul in this world, moving through many temptations and finally realizing what truly matters. मतलब हर चीज़ को उसने देखा, हर मटेरियलिस्टिक चीज़ को देखा, इन्जॉयमेंट वाली चीज़ को देखा, लेकिन एंड में उसको क्या रियलाइज़ होता है कि उसका जो पेरेंट्स है, उसका जो सेफ्टी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्राइसलेस है. सो द बिजी स्प्रिंग फेयर इन द स्टोरी कैन बी सीन एज द मटेरियल वर्ल्ड, द वर्ल्ड फुल ऑफ थिंग्स दैट अट्रैक्ट एंड डिस्ट्रैक्ट अस. ठीक है, ये जो फेयर था, मतलब जो मेला था, वो क्या सिंबलाइज करता है? मटेरियल वर्ल्ड को, जिससे देखकर हम कभी भी अट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं. आनंद डिस्क्राइब्स द फेयर एज ब्राइट एंड क्राउडेड, शोइंग हाउ वर्ल्डली प्लेजर कैन लुक एक्साइटिंग बट ऑल्सो ओवरवेलमिंग.
Each thing in the fair stands for a kind of human desire, like toys for material possession, sweets for pleasure of taste, flowers for beauty, and the roundabout for short lived excitement. मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया ना, सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है. The noisy, crowded fair is like modern life, where we are surrounded by constant distraction. So the child in the story represents all human beings. At first, he is full of excitement, moving from one thing to another, just like we often run after one desire after another. And when his parents say no to the toys, it shows a common truth. We don't always get what we want. तो जब उसके पेरेंट्स मना करते हैं तो ये भी एक रियलिटी है कि हमें हर चीज़ नहीं मिलती है जो हम चाहते हैं. And when he loses his parents, it symbolizes how we can feel lost or separated from our true purpose in life. In the allegory, parents represent divine guidance or wisdom. They refuse to buy everything for the child, not to punish him, but to protect him from getting too attached to worldly things. तो यहाँ पर हम पेरेंट्स को किस तरीके से देख सकते हैं, डिवाइन गाइडेंस की तरह, जो मतलब उस बच्चे को रास्ता दिखा रहा है कि मतलब हर चीज़ के पीछे मत भागो, स्पेशली जो वर्ल्डली चीज़ है उसके पीछे मत भागो. When the mother says, look at what is before you, it can also mean look at real beauty in life, not just material things. When parents disappear, it is like a stage in spiritual life, when person feels far from God. But this distance makes them realize how important that connection is. The moment when boy realizes his parents are gone is the turning point. Suddenly, he no longer wants the toys, sweets or balloons. His only wish is to find his parents. So what this shows that in real life, when we truly start seeking something deeper, all the earlier attraction lose their charm. The kind man tries to cheer him with all the things once he wanted, but the boy rejects them because now his heart is set only on his parents. So friends, this story is full of allegorical symbols. Like the mustard field shining like gold shows both nature's beauty and the path of something higher. The big banyan trees gives shelter like grandmother. So this symbolizing both comfort in life and divine protection. Then shower of flowers that the boy leaves behind when he hears the dove's call shows that even beauty can be left behind when a higher call comes. तो फ्लावर किसको सिंबलाइज करता है, ब्यूटी को सिंबलाइज करता है. लेकिन जब उसने चिड़िया की आवाज़ सुनी, ठीक है, तो बच्चे ने फ्लावर्स को सब नीचे फेंक दिया और वो चिड़िया की आवाज़ की तरफ चला गया. तो इस क्या बता रहा है कि मतलब जो उससे भी बेहतर कॉल था, हायर कॉल, उसके लिए ब्यूटी को भी इसने यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया. Then here the allegory also connects to different spiritual tradition, like Guru Nanak's idea that all people are like children lost in world's fair. Then Christian believe that sometimes God feels absent so our faith can grow stronger. Buddhist teaching that too much desire leads to suffering. Then the story also reflects a journey of many people, okay, many people's experience. Like we start by enjoying the pleasure of life. Then we slowly see that these pleasure don't truly satisfy us. We face crisis that makes us question life. We begin to search for something deeper. So friends, story works both as a simple tale and as a deep lesson. It tells us that our bigger need is not material things, but the love and connection that truly matter. In spiritual term, it is called the love of God. The ending leaves us with a question. Once we realize that worldly pleasures are not enough, how do we find our way back to what is truly important? So in this way, Mulkraj Anand's simple story becomes timeless allegory of the human condition. The next question is it possible to interpret the lost child on two levels? If so, give reason for your answer. तो हम ये स्टोरी को टू लेवल पे इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं. एक तो है सरफेस लेवल और दूसरा है डीपर लेवल. तो सरफेस लेवल पे क्या आ सकता है, जो स्टोरी का सिंपल और डायरेक्ट मीनिंग है वो, और जो डीपर लेवल है उसे हम स्पिरिचुअल या फिर समझ लो जो हिडन मीनिंग होता है, जो सिंबॉलिक मीनिंग होता है, उस तरीके से समझ सकते हैं. सो हियर इज एन इंट्रोडक्शन. काइंडली रीड दिस इंट्रोडक्शन. फर्स्ट विल सी the surface level, means we'll see the simple and direct meaning of the story. A little boy goes to spring fair with his parents and like any child, किसी भी बच्चे की तरह, एक आम बच्चे की तरह, he gets attracted to many things, colorful toys, sweets, flowers, music and the fun roundabout ride. So everything he asks his parents, but they say no.
नॉट बिकॉज दे डोंट लव हिम बट बिकॉज दे आर प्रैक्टिकल। मतलब कि बच्चों की हर बात को पूरा नहीं करना है, हर जिद को पूरा नहीं करना है, ये उनका माइंडसेट था। देन द टर्निंग पॉइंट कम्स व्हेन द बॉय लूजेस हिज पेरेंट्स इन द क्राउड। सडनली ऑल थिंग्स ही वांटेड बिफोर lost their value. Now he doesn't care about any toys or any sweets. The only thing he wants is his mother and father. So this shows us that in the real life, love and family are more important than any material thing. And now let's look at the deeper meaning. The fair in the story is like the world itself. अगर हम deeper meaning की बात करेंगे, symbolic meaning या फिर जो hidden meaning है ये story में, तो इसमें जो मेला लगा है, तो मेला किसको सिंबलाइज करता है? पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। जो पूरी दुनिया है वो किससे बनी है? पूरा अट्रैक्शन है, फुल ऑफ अट्रैक्शंस एंड डिस्ट्रैक्शन, दोनों अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन। द टॉय स्टैंड फॉर मटेरियल वेल्थ, द स्वीट्स फॉर प्लेजर, द फ्लावर फॉर ब्यूटी एंड द राउंड अबाउट फॉर थ्रिल्स एंड एक्साइटमेंट। तो पूरी वर्ल्ड में यही सब होता है। हमारी जो दुनिया है उसमें क्या है? उसमें है मटेरियल वेल्थ है, उसमें है प्लेजर, उसमें है ब्यूटी, उसमें है एक्साइटमेंट। और जो पेरेंट्स है, सो पेरेंट्स हियर रिप्रेजेंट विजडम और गाइडेंस, ऑलवेज ट्राइंग टू लीड द चाइल्ड टुवर्ड्स व्हाट इज right. When the boy gets lost, it is like human being losing their way in the world. His cries for his parents represent human soul's desire to return to its true source. And what is true source? God or higher truth. So the story is not just about a child, it is also about us. Friends, Mulkraj Anand himself said that this story was inspired by Guru Nanak's teaching that we are all children lost in the world fair. This clearly shows that Anand wanted to give a spiritual message through a simple story. He wanted to show that no matter how many pleasure and attractions we run after, in the end, our deepest need is love, guidance, and spiritual connection. The way Anand writes also adds to the meaning. In the beginning, the fair is described as very attractive, like toys, sweets, flowers, music, everything looks magical. But once the boy loses his parents, all these things become meaningless. So this shows how worldly pleasure lose their charm when we are separated from what really matters, love and connection. The ending of the story is also open. We don't know if the child find his parent or not. On one level, this makes the story more emotional and realistic. On the another level, it shows the human struggle, the fight between worldly attraction and the search for truth. Even when a kind stranger offers the boy sweets, toys and rides, the child refuses them all. He only wants his parents. Now let's see the conclusion. So the lost child works on two levels. As a simple story, it shows us that family love is more important than material things. And as an allegory, it teaches us that human life is not just about pleasure or possessions, but about finding deeper meaning and connection with the divine. And that's why this story is very powerful and thought-provoking. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के और वीडियो चाहिए तो आप टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।